Good evening, participants. Uh, Today we have a very esteemed speaker, and I will say the former director of HRDC AMU, uh, Professor Abdul Rahim Kidwai Sahab, popularly known as Professor A.R. Kidwai. He is a professor of English. He did his MA, MPhil, PhD in English literature from Aligarh Muslim University, and sir, second PhD is in English from Lord Zane's Turkish State under the supervision of Professor Vincent Newey from the University of Lancaster, UK in 1993. He did his advanced certificate in teaching of English as a foreign language from Aston University, UK. Participants, सर की जो सीवी है बहुत लंबी है, मैं बहुत कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा. As far as academic positions which sir I have had already, is director of UGC Human Resource Development Center at University from 2001 till his retirement. Okay, that's that is sufficient. Leave it. That's more than enough. Okay. One more thing which I would like to add over here, sir is the has special interest in following areas of study: literary Orientalism, English translation of Quran, Urdu, English Urdu translation, interfaith dialogue, Islam in the West, where I have 40 books in his credit, including some edited book ones. Uh, with these words, I would like to invite sir to speak on the topic academic leadership. Thank you very much, sir. Thank you very much for keeping the introduction brief. Let us talk business. Uh, it is my dear fellow teachers from all parts of the country. Welcome to the course. You know very well the course is called Orientation Program regarding National Education Policy. I will use a mix of both English and Urdu. Right. तो देखिए पहले जो जरा ध्यान पूर्वक आप इसको सुने. इस कोर्स को हम why do we call it orientation program? ये वर्ड निकला है ओरिएंट से. ओरिएंट ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है. इट मींस ईस्ट, द डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट. इसका अपोजिट है ऑक्सीडेंट, OCCIDENT, ऑक्सीडेंट, जिसका मतलब होता है वेस्ट. लेकिन जब हम ये ओरिएंटेशन इस्तेमाल करते हैं या ओरिएंट एक स्पेशल सेंस में इस्तेमाल करते हैं, then it is not geography. It means showing a path, guiding someone to something. In other words, sensitizing you, making you aware, making you familiar with something. That's what is the idea in orientation. So, the topic or the theme is National Education Policy. And the purpose of this program is to let you know as much about this National Education Policy as is possible. I know some very distinguished speakers like Professor Ved Prakash, Dr. Shakila Shamshu, who have been the academic leaders in the Ministry UGC and Ministry of Education. They already held sessions with you on academic leadership. I will try to supplement and complement it. इस बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं. तो देखिए आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें कई यूनिट्स हैं और एक यूनिट जो है वो है यूनिट 3, वो है एकेडमिक लीडरशिप के बारे में. Now both these words, they need attention. Academic, of course, related to education.
but education in a very broad sense, not just teaching or classroom. It covers the whole spectrum. Again, the word academy, academic, it comes from the word academy, which means the word of knowledge. Knowledge in its totality, that stands for academy and academic. So please don't think that it is only about classroom, it is only about teaching, chalk, walk, and talk. It is something beyond that. What is it? We will just see. The other equally important and key term is leadership. Yes, now you have to be very alert. Dr. Yasir, are you following me? बताएं यासिर साहब, आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, राइट। तो देखिए, ये जो टर्म है लीडर, ट्राई टू grasp it. Very common word, and ours is a democratic country, so we know leaders very well. But when we use this in the academic context, leadership means being a mentor. MENTOR. आपने स्कूल डेज में मॉनिटर का वर्ड सुना होगा, ये उससे एक डिग्री ऊपर का रोल है, मेंटोर, MENTOR. Teachers are of course teachers, but they are more than teachers. Who are they? They are mentors. A mentor is a guide. Again, look, in PhD we have guide, but they have a limited role about your PhD thesis. But when we say academic leader, or when we say mentor, it is a wide-ranging term. It covers many aspects, which we will discuss one by one. So the important point to note is that UGC, or the new education policy, it wants to see you performing the role of an academic leader, not only a teacher who gets a timetable, 20, 24 hours a week classes, checking the answer book, and vacation, and getting salary. No, something beyond that, something more than that. What is it? That's what we are going to discuss one by one. According to National Education Policy, so the first important point to be underlined by you is that it has transformed your role. I have deliberately used the word transform. देखिए, अंग्रेजी में किसी भी होता है, लैंग्वेज में तरह तरह के शब्द होते हैं और उनका अपना अपना एक मीनिंग सेंस होता है. तो इंग्लिश में एक वर्ड है ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर. मैं एक कपड़ा पहने हुए हूँ, ये बहुत टाइट हो जाए, आई विल टेक इट टू टेलर, ही विल ऑल्टर इट. माइनर चेंज जो होता है उसको हम ऑल्टर और ऑल्टरेशन कहते हैं. ओके,
नेक्स्ट वर्ड है चेंज। चेंज जो है वो एक तरह का न्यूट्रल वर्ड है। मैंने जो वर्ड यूज किया वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म किसको कहते हैं? ट्रांसफॉर्म, changing one form to another. Water is there and we produce electricity from it. Hydro power station. Nuclear energy. Atom is there. We transform it into gas or electricity. That is transformation. Coal is there. With coal, we get electricity. That is a thermal power. So when we use the word transform, it means total change. तो देखिए ये बात आपकी समझ में आई कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या चाहती है आपसे कि आपके रोल में एक बदलाव आए। और कैसा बदलाव? टोटल, कंप्लीट, हर तरह से उसमें बदलाव आए। क्या बदलाव आए? तो ये बात तो तय है, ये तो इम्पोर्टेंट बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ये डिमांड है कि टीचर्स जो है हमारे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हो चाहे वो कॉलेज के हो, दे हैव नाउ टू परफॉर्म द रोल ऑफ एन एकेडमिक लीडर। अब जब आपको एक रोल परफॉर्म करना है तो नेचुरली उसके लिए कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। Look, what according to national education policy, what are the qualities, what are the features of an academic leader? The first one is naturally is that effective leadership. Effective. You get the word? Effective means getting the results. Not only fulfilling a formality. Not just doing a job for getting salary. Effective. Bring about a change in yourself. Listen carefully. Change in yourself, change in your teaching methodology, a change in your students, how you train them, a change in the curriculum, जो आपका सिलेबस है या और एक्टिविटीज है, उसमें there should be a change. A change in the institution in which you are working, चाहे भी मैंने कहा चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, उसमें किस तरह का चेंज? उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके फाइनेंस में, उसकी रैंकिंग में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में. So look here, what is the vision, what is the target? That an effective leadership which brings about changes in all the stakeholders. Stakeholders means participants. So you are one of the participants of the educational system. Students are participants. Institution is a participant. Then parents of your students, they are a stakeholder.
Then business and industry or market forces, they are a participant. Then the whole nation or state and people, public, they are also a participant in the educational system. Right. How are you, Dr. Neeta? Are you following it? Dr. Neeta, am I audible to you? Okay, right. So this is the first thing. Ministry of Education, National Education Policy, they want you to be a leader. And what kind of leader? Not in the election rallies, not in the public speaking. They want you to be a leader in the field of academic world. And what kind of leader? Effective leader. Someone who brings about changes. अब देखिए, आप भी जरा सोचिए, आप सब स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, यूनिवर्सिटी में रहे, ऑन द एवरेज 100 से ज्यादा टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा पूरे आपके एजुकेशनल कैरियर में। प्रभावित आप किससे हुए? 4, 5, 10। क्यों? उन्हीं से क्यों हुए, बाकी से क्यों नहीं हुए? डॉक्टर सोपन, आर यू फॉलोइंग मी? राइट। तो हमें कुछ अपने टीचर्स याद रह जाते हैं। क्यों याद रह जाते हैं? बिकॉज दे आर इफेक्टिव टीचर्स। और इस पर गौर कीजिए। देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में टीचर होता है वो क्वालिफाइड तो होता ही, कहने की जरूरत ही नहीं कि उसके पास मास्टर्स की डिग्री होगी, पीएचडी होगी, उसकी किताबें होंगी, उसके पेपर्स होंगे, उसके साइटेशंस होंगे, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में है तो पेटेंट्स होंगे। दैट इज अंडरस्टूड, दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन आपको जो याद रहे टीचर, अभी मैंने आपसे कहा, आप जरा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। 100 से ज्यादा टीचर्स ने आपको पढ़ाया और आपको अभी 10 साल हुए होंगे छोड़े हुए यूनिवर्सिटी कॉलेज। आपको याद कितने हैं? तो थोड़े से टीचर्स याद, 10%, इवन 5%। वो क्यों याद है आपको? अब आप देखिए, अब आपके काम की बात है, वो क्यों याद है आपको? बिकॉज दे वर गुड इन कम्युनिकेशन। That is the key word, communication. That is why it is mentioned as a quality of an academic leader. A good teacher is he or she who can communicate. Communicate means to convey what you want to others, and how? In an effective way, so that your students, they follow it, they grasp it. उनके दिल में, उनके दिमाग में आपकी बात उतर जाए
This is what is communication. आप हार्वर्ड की पीएचडी हैं, आपकी 50 किताबें हैं, आपके 200 पेपर हैं, आपके 20 पेटेंट हैं, आपको फला अवार्ड मिला, फला अवार्ड मिला. As I said, that's all. There are distinctions, no doubt. लेकिन टीचर के लिए जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर मुकुल जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप अपनी बात उस तक पहुंचा पाते हैं या नहीं. If you do that, then you are successful. Your students will remember you throughout your life. They will be, वो हमेशा आपके आभारी रहेंगे. गुरु आपको दिल से मानेंगे. कब होगा ऐसा? मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आपकी जितनी क्वालिफिकेशन पेपर पे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम की बात यह है कि क्लासरूम में या जब आपका उससे इंटरेक्शन हो रहा है अपने स्टूडेंट से, तो आप अपनी बात ढंग से, सलीके से, अच्छे अंदाज से उस तक पहुंचा पाते हैं या नहीं. दिस इज व्हाट इज कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन इज बोथ वर्बल, स्पीच की फॉर्म में होता है और रिटन होता है, एज ए नोट, एज ए लेटर, एज एन आर्टिकल, एज अ बुक. ये कम्युनिकेशन जो है, दैट इज द मोस्ट important quality in a teacher. If you want to be an academic leader, if you want to be remembered by your students, अभी आपका बहुत कैरियर है, 20 साल, 25 साल, 30 साल अभी आपको और पढ़ाना है. Please try to develop communication skills. अभी कम्युनिकेशन के बारे में भी और भी मैं डिटेल में बात करूंगा. एक बात तो अभी आपको बता दूं, देखिए अब तो बहुत आसान है, हमारे जमाने में ये सहूलत नहीं थी. आपके मोबाइल पे इतने प्रोग्राम्स आते हैं, हर तरह के प्रोग्राम. जिस प्रोग्राम में आपको इंटरेस्ट हो वो टच बटन से यू कैन सी. कॉमेडी चाहिए तो कॉमेडी, फिल्म चाहिए फिल्म, न्यूज चाहिए न्यूज, वट एवर यू वांट. मेरी आपसे एक विनती है, अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, उसको कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए. अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है. 10-12 scholars from different departments, different universities, वो उनके प्रेजेंटेशन हुए आपके सामने. प्लीज आप ये ध्यान दें कि उनके प्रेजेंटेशन का क्या तरीका है, क्या स्किल्स वो यूज करते हैं. how do they start a discussion, how they introduce a topic, how they give examples, how they illustrate their point. Some use data, facts and figures. Some use PPT, other educational gadgets. How they deliver on and on and on and on, so it becomes irritating, boring, monotonous.
Do they pause? Do they give some time for you to assimilate? नोट की बात मैंने नहीं कही, assimilate मतलब उसको अपने अंदर आप उतार सके. How they explain something. How they conclude an argument. How they interact with you in the form of question, answer or discussion. तो ये जितने भी आपके रिसोर्स पर्सन हैं, इनका अपना अपना प्रेजेंटेशन का अंदाज. मेरी आपसे जो विनती है, रिक्वेस्ट है, वो ये है कि उनका जो कंटेंट है वो तो आप जरूर नोट करें, लेकिन ये भी नोट करें कि इनका प्रेजेंटेशन का स्टाइल क्या है, कि उनकी क्या स्किल्स है, क्या टेक्निक्स है, और जो आपको प्रभावित करे, जो समथिंग विच यू लाइक, जिसको हम कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, जहां जहां जिसकी जो अच्छी चीज हो उसको आप ऑप्ट कर लीजिए. अपनी टीचिंग स्टाइल का, अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी का, अपने डिलीवरी सिस्टम का उसे पार्ट बना लीजिए. ये ऑब्जर्वेशन से कम्युनिकेशन स्किल्स आती है. कोई बच्चा जब पैदा होता है उसके he or she does not have communication skills. Only with time, with experience, with interaction, and most importantly with the help of careful observation, you know what is good, effective, forceful, helpful, listener friendly communication. और जितना ज्यादा आप अपना कम्युनिकेशन बेहतर करेंगे, उतने ही बेहतर आप एकेडमिक लीडर होंगे. Your students will have great respect for you. They will listen attentively to you if they realize that you are good at communication. तो कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली प्रेजेंटेशन की स्टाइल है, टेक्निक है, स्किल है. और मैंने भी आपको बताया कि वो आप चाहे वो रिसोर्स पर्सन हो या जो भी प्रोग्राम्स देखते हो आप अपने इंटरनेट पे, यू कैन. इट इज ए सेल्फ लर्निंग प्रोसेस. Observation is the key. You note what is striking, what is special, what is impressive, and please follow the same. If you do that, I can assure you your students will always remember you with gratitude, remember you with respect. 10 लोगों से वो आपका नाम लेंगे. हमारे एक सर थे, हमारे एक गुरु थे, ऐसा पढ़ाते थे, ऐसा बात को समझाते थे कि दिल में उतर जाती थी. भूल नहीं सकते थे हम उसे.
This is the role of an effective teacher, that he is good at communication. As I said, I will discuss communication later when I have more time. Let me quickly pass on to the next quality. तो देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपका रोल एकेडमिक लीडर का है। एकेडमिक लीडर की कुछ क्वालिटीज है जो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक आप में होना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए कि उन्हें डेवलप करें। तो पहली क्वालिटी, पहला फीचर है इफेक्टिव लीडरशिप। नेक्स्ट वाज कम्युनिकेशन, अभी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। नाउ द नेक्स्ट क्वालिटी according to NEP document is empathy. इसको भी आप प्लीज समझने की कोशिश करें। संस्कृत की तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी रूट वर्ड्स हैं और उन रूट वर्ड में आगे पीछे कुछ मिलाकर हम नए नए शब्द बनाते हैं। जय अजय हो गया, विजय हो गया, प्रजय हो गया। तो ये वर्ड जो है एम्पैथी, इसमें रूट वर्ड जो है, असल वर्ड है वो है ग्रीक वर्ड पैथोस, PATHOS, पैथोस। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग्स, इमोशंस। इसी को हम पैथी कहते हैं, PATHY, पैथी। राइट। पैथी में अगर आपने एंटी लगा दिया तो अपोजिट फीलिंग, I have antipathy to pollens, that is, I am allergic. I have antipathy to antisocial elements. Look here, social, good, antisocial, they are bad characters, so I have antipathy to them. Antipathy means dislike. अब पैथी में आपने SIM वर्ड इस्तेमाल कर दिया, सिम, तो वर्ड बन गया सिंपैथी। सिंपैथी, सिम मीन्स सेम, सेम फीलिंग्स। डॉक्टर यासिर, योर फ्रेंड is happy, he got success. You join the celebrations, that shows your sympathy. Same feeling, he is happy, so you are happy. Or, God forbid, if your friend lost his mother, naturally, he's sad. So if you also show grief to him, that is sympathy. Same feeling which the other person has. I give you the example of your friend or family, your son and daughter is not feeling happy and you try to comfort, console him or her. That again is sympathy. So sympathy is a very good quality which we should have, and all of us have it. This is human nature. Generally, human beings are sympathetic to one another. If they are not, that is something sad. But what the document says and what word is used here, it is empathy.
EMPATHY. इसको अब आप एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, up to 1947 the British foreigners, they ruled over our country. Naturally, they had nothing in common with Indians. They were invaders, they were ruling, they were taking out all the money, valuables from our country. And worst thing was their treatment was very humiliating for all of us, for our father, grandfather, just 75 years ago. You know very well about Jallianwala Bagh. In one day, in 1 hour, in even 10 minutes, thousands of poor, defenseless, selfless Indians in the crowd, they were shot dead. It was not a war, it was not a battle. They were just there to listen to a speech, and General Dyer, he opened fire and thousands were killed. So inhuman treatment of Indians at the hands of the British. That was a very harsh, tragic, but it was a reality. Now look here. In 1920, a British novelist, writer, E.M. Foster, who was a friend of Sayyid Ras Masood of Aligarh Muslim University, to which we belong. He was a personal friend of Masood. At his invitation, E.M. Foster came from England to India, visited Hyderabad, Bhopal, Calcutta, many, and naturally Agra. Look, he was a writer, creative writer, artist, sensitive soul. He was a British, he was a white man. Look, after 2 years, he published a novel. The title of the novel is A Passage to India. If there are some teachers of English here in this group, they know it very well. Published in 1922. A Passage to India. Passage means travel. Now listen carefully. In that novel, he condemns, he criticizes very harshly the white English officers, DM, collector, police walas, and all of them for treating Indians like insects and animals. He shows love, affection, kindness for Indians. Dr. Aziz is one of the characters. Professor Godbole is another character. He is full of kindness towards them. Of course, he praises Taj Mahal. That's not something very special. He praises the Janmashtami festival. He praises temples all over India. He is full of admiration for mosques. He shows amazement about Ajanta Ellora caves, about Himalaya, about Ganga.
Look, who is he? He's not an Indian. He's not a Hindu. He is not what we are, black or third world. Totally different, but having sympathy for Indians. This is called empathy. Sympathy is having kindness towards your own friend and family. Empathy is having kindness, affection, love for those who do not belong to you. Look, what is the idea? In your class, you are a Bengali, there may be somebody from Odisha, Odia. You may be follower of one religion, your student may be follower of another religion or no religion at all. You belong to one culture and your student, your colleagues, your co-passenger in a train, in a flight is different. Still, if you have love, sympathy, affection for someone who is different from you in religion, in culture, in language, in race, in age, in gender, male and female, and Punjabi and Gujarati, and this Northeast and Western India, there are so much diversity in our country. So empathy is believing in unity in diversity. So a good teacher, an academic leader is he or she who follows empathy. So I hope this is clear to you. Empathy is something higher, something deeper, something more profound than sympathy. जैसे मैं भी आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था, सिंपैथी खासा कॉमन ह्यूमन फीचर. We share the sorrows and joys of our near and dear ones. This is very natural. But to have same love, kindness, and affection for somebody who is not one of you, that is empathy. Education teaches you empathy. And I give you the example of E.M. Foster. You know very well another example of Mother Teresa, Belgian, lady, Christian, white, and how she spent her life in Kolkata, working for the welfare, betterment of the poor, the destitute, the needy, the hungry. She devoted her whole life to serving them. That's empathy. So national education policy, it teaches you the lesson that a teacher or an academic leader is someone who transcends. Transcend means goes above the narrow boundaries of religion, language, culture, race, faith, and all this. Universal outlook. For me, a student is a student. What is his professional background, who his father was or is, what is his caste, color, religion, or gender, that makes no difference to me.
I should help my student, whoever he or she might be. I should guide them. I should do whatever I can for them without thinking of these labels. ये जो हमने artificial labels बना रखे हैं कि फला जो है वो ये है, वो है, वो ये है, ये उस रीजन का है, ये उस लैंग्वेज का है, उस रिलीजन का है, उस रेस का है, ये सब आर्टिफिशियल लेबल्स हैं. We all are human beings. We all are Indians. We all are working for nation building as teachers, as students. So, common bonding, solidarity, standing together, that is one of the goals of education and the role of an academic leader. So my request to each one of you is to follow this valuable principle of national education policy. What is that? The quality of empathy. Broad-mindedness, tolerance, catholicity of mind, respect for everyone, particularly for the underprivileged, for women, for the poor, for the underprivileged. We should be more sensitive. This is what is empathy. Right. Now the next quality, according to NEP document, is grit. G-R-I-T. Grit. Tendulkar, Gavaskar, Kohli, all of them, they are gritty batsmen. Gritty means determination, resolve, commitment. They have to bring victory to their country. This is what is grit. And when we say somebody is a Kohli is a gritty batsman, what it means is he is determined. 100% commitment. So look at teacher, the Ministry of Education, or this document, it wants teachers to be gritty, devoted to their mission, devoted to their goal. What are the goals? Naturally, there is one goal for all teachers, that is academic excellence. And let me again clarify, when we say academic excellence, it is not something personal that Dr. Santosh, he or she gets this and that. Of course, should be personal distinction, but for everyone, for your students, for your institution, for the country. That's what the objective is. So great, I hope great is a simple, clear word. That's devotion, commitment. Next quality mentioned in the document is focus.
Yes, focus, clear. Just as if you focus the camera, then the picture is clear. If it is not, focus is not there, it will be a blurred picture. You will not like or appreciate that. My dear fellow teachers, based on my experience, I've taught naturally for years and years. In my opinion, the most important quality in a teacher is clarity of mind. If you have clear concepts, only then you can communicate it to your students. If you have command over your subject, you will develop clarity of thought, clarity of expression. And this clarity, you understand, clear, and from this word we have the word clarity, clarity. Clarity of mind. In your mind, it should be absolutely clear what is your goal, what are the steps, how you have to achieve it, and how much time, money, and energy is needed. Just like an engineer who has the blueprint, he knows what job is to be done, how it is to be done, what resources are needed for that. So this clear-headed. If you are not, you will not be a good teacher. You will be digressing from here to there. You will be saying things which are not intelligible or appealing or interesting to your students. So focus, in other words, is clear vision, goals, objectives, targets. They should be absolutely clear to you, and you should strive for it. That is another quality according to national education policy. Next is, yes, institutional development. This is another important role for you. In my days, life was very simple. I'm talking about 1970, 1980, when we didn't have this ranking system. Now we have NAC, now we have INRF, we have Times Higher Education, World University Service, hundreds of agencies monitoring you, checking how is your university, how is this university, how is this college, how is that college. So, as I told you earlier, work for your personal development, your professional advancement, but you have to do it for the institution also. How to take your college or university forward, how to plan not just the lesson plan, but the plan for your institution, its advancement, its expansion, its development in every sense: financial, administrative, infrastructure, extracurricular,
in every sense, you should think of institutional development. रैंकिंग कैसे अच्छी आती है, जो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो सब पूरे हो, तभी अच्छी रैंक मिलती। अब देखिए, ये मेरे इंट्रोडक्शन में ये बात कही गई, मैंने इंग्लैंड से पीएचडी किया और मैं यहाँ बहुत साल विजिटिंग प्रोफेसर भी रहा स्कूल ऑफ इंग्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में, लंदन से 100 माइल्स। अब मैं आपको एक रियल लाइफ से एनेक्डोट बताता हूँ, इससे आपको अंदाजा होगा ये रैंकिंग या क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब चीजें क्या हो। और देखिए, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 1990 की, अब तो 2024 है, 40 इयर्स पहले का मैं इंग्लैंड बता रहा हूँ। अब तो क्या कहें, 1990 में मैं एज ओवरसीज फॉरेन स्टूडेंट पीएचडी में एनरोल हुआ। मैं एक पहले पीएचडी कर चुका था। ध्यान से सुनिए, तो जब मेरा पीएचडी में एडमिशन का इंटरव्यू हुआ, नेचुरली उन्होंने मेरा पहला पीएचडी का थीसिस जो है वो देखा, और मुझे बताते हुए कोई इसमें ज्यादा शर्म नहीं आ रही है, बट दैट्स व्हाट दे सेड। दे सेड, if you do the same kind of work which you have done in your first PhD, we will not award you even the degree of BA. Forget about MA or PhD. और से सुने आप, नेचुरली मैं पूछा, what do you mean? They said it lacks originality. और यही एक हमारी एजुकेशन सिस्टम की बेसिक कमजोरी है। We do not encourage creative activity among our students, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी। हमारा फोकस किस पे रहता है? एग्जाम पास कर ले जी, गंगा नहा ली। सेल्फ डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, इंक्विजिटिव माइंड, क्रिटिकल फैकल्टी कुछ स्टूडेंट्स की नहीं हो रही। राइट, तो खैर उन्होंने तो ये कहा कि आप ओरिजिनल काम कीजिए, ओनली देन यू विल गेट ए डिग्री एंड फाइन। जो जरूरी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ये नहीं, फिर मैं बता दूं, ये 1990 की बात। अब तो कंसेप्ट बहुत आगे बढ़ गए। एज एन इंडियन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहा हूँ, एनरोल किया। 6 महीने बाद डाक से, ईमेल का जमाना नहीं है, डाक से खत आया, कॉन्फिडेंशियल पे लिखा था, और लिखा था कि आप किसी को ये बताएं ना, तो डिग्री आपको अवार्ड नहीं हो जाती। और खासतौर से अपने सुपरवाइजर को मत, आप में ज्यादातर लोग होंगे पीएचडी, या तो खुद पीएचडी के साथ सुपरवाइजर हैं, या आपने किसी सुपरवाइजर गाइड के साथ काम किया होगा। तो आप देखिए, आप ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बता रहा हूं मैं। तो लेटर था रजिस्ट्रार ऑफिस से किसी असिस्टेंट का था कि ये प्लीज, ये जो फॉर्म हमने आपको दिया है, ये भर के आपको वापस भेज दीजिए विद इन अ वीक, एंड डोंट डिस्कस इट विद एनीबडी, particularly with your supervisor. अब आप सुने,
तो वो क्वेश्चनेयर था, 15-20 सवाल जो मुझको याद रह गए, अभी बता रहा हूँ। पहला सवाल नेचुरली यही था कि वो कितना टाइम आपको देते हैं, टाइम मिलने में, अपॉइंटमेंट में कोई परेशानी तो नहीं, जितना टाइम देते हैं उसमें वो चाय तो नहीं पीते, उनके कोई दोस्त तो आके नहीं बैठ जाते, टेलीफोन पे तो वो बात नहीं करते, चाय सिगरेट में तो टाइम अपना नहीं लगाते। ये बताएं, आधे घंटे की आपसे उनकी मुलाकात होती है, कितने मिनट वो बोलते हैं ऑन द एवरेज, कितने मिनट आप? ये बताएं, पिछले 6 महीने में क्या वो आपको अपने साथ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ले गए? आपको उन्होंने कितनी आपके सब्जेक्ट से मुतालिक नई किताबें बताई? आपको कितनी कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बताया कि जिसमें आप जाइए, लिखिए? आपने जो चैप्टर उनको लिख के दिया उसमें उन्होंने कितना करेक्शन किया? 10%, 20%, 60%? और जो करेक्शन किया उससे आप सेटिस्फाइड है या नहीं, हेल्पफुल है या नहीं? जब डिस्कशन होता है तो कोई नए आइडियाज उन्होंने आपको दिए या? वो आपको जब बातचीत करते हैं इनकरेज करते हैं, या आपको ये ख्याल होता है कि आपको, ह्यूमिलिएट तो स्ट्रॉन्ग वर्ड है, अगर आपको रन डाउन कर? इसी तरह के सवाल, एंड प्लीज सेंड दिस रिपोर्ट विद इन अ वीक। कोई बात नहीं, मैं था लिख के भेज दिया। जब मैं डिग्री मुझको अवार्ड हो गई तो मेरा सुपरवाइजर जो था वो इत्तेफाक से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी था, डीन भी था, चेयरमैन एंड डीन। देन on that day, after 3 years, he said, "Thank you, Abdul, for your excellent report. Because of that, I got my annual increment." देखिए, यूनिवर्सिटी का सीनियर प्रोफेसर है, चेयरमैन है, डीन है, और उसको इंक्रीमेंट जो साल का होता है ग्रेड का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? उसके जो पीएचडी स्टूडेंट की फीडबैक रिपोर्ट पर। हमको आपको इंक्रीमेंट ना मिले, डीए ना मिले, यूजीसी मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, इसको हम अपना बर्थ राइट समझते। इट इज नॉट। पूरे इंग्लैंड, अमेरिका, कोई परमानेंट जॉब नहीं, टेन्योर अपॉइंटमेंट, 2 years, 3 years, 5 years. If you perform well, if your students are satisfied, you get extension. Otherwise, goodbye. हमने अपना हाल खुद खराब कर, जॉब ही नहीं मिलता। मिल गया एक बार परमानेंट जॉब तो बस आप तो कुछ करने ही नहीं। वो भी गलत है, जॉब ना मिलना और जॉब मिल जाने के बाद उसका हक नहीं अदा करना, बोथ आर इक्वली बैड प्रैक्टिसेस फॉर अवर educational system. So I gave you my personal example about the British educational system. ये क्यों आगे है? हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड में नंबर 1, 2 पे क्यों? उसी की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, स्टूडेंट्स फीडबैक।
स्टूडेंट्स सेटिस्फैक्शन। क्योंकि उनकी लॉयल्टी उस प्रोफेसर से नहीं है। उनको क्या चाहिए कि जो उनके कस्टमर की तरह स्टूडेंट जो है वो कस्टमर हैं, वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इफ बिल्कुल शॉप वाला अंदाज है, you go to a shop, if he serves you well, if you get what you want, you are happy, you go to that shop again. अगर ऐसा नहीं होता तो आप उस दुकान में कभी भूल के भी नहीं जाते, बल्कि अपने दोस्तों भी कहेंगे अरे बड़ा खराब, बहुत घटिया। So this is the point. This is what next point I'm going to discuss with you. Challenges. एजुकेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट में तो इसका जिक्र नहीं है, बट आई एम टेलिंग you have to face some very serious challenges in future, in 5 years, 10 years time. And please don't forget about who is the ruling party, A or B or C, nothing to do with anything political. The challenges which you have to face now onwards are very serious. I will discuss only 2 or 3 with you because you are the future of our education system. पहला चैलेंज है फाइनेंशियल। The policy has already changed. It will be implemented in 2 years, 5 years time. Again, nothing to do with one particular political party. जो भी political party आएगी वो यही पॉलिसी फॉलो करेगी। वो क्या पॉलिसी है? लिसन केयरफुली। सेल्फ फाइनेंस। भूल जाइए यूजीसी ग्रांट के बारे में, भूल जाइए कि आपकी सैलरी दिल्ली से या स्टेट कैपिटल से आएगी। नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज नॉट पॉसिबल। You raise your own funds. वो कैसे करें आप? फीस बढ़ाइए। फीस कहाँ से लाएंगे? जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है कंट्री की, सबको पता है। स्टूडेंट फीस कहाँ से लाएंगे? बैंक से लोन लीजिए। माता पिता पे कोई बोझ नहीं पड़ रहा। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है, लाखों में फीस होती है। अब सारे गवर्नमेंट स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी वही फीस स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होने वाला। स्टूडेंट फीस कहाँ से लाएंगे? बैंक से लोन लीजिए। जब जॉब आपको मिल जाए वो पैसा वापस कीजिए। Government is not going to give you any money for running your institution. That is a challenge, a big challenge. ये आपके सर्वाइवल का मामला है। Mentally, emotionally, be ready for this. It may sound very threatening, but I am telling you this is what the policy is. And this policy is not, let me not say that it is only from 2000, this particular year. In 1980, I remember very well in 1990, at a legal one UGC official was there and he said, no way, you are not going to get state grant. And some of you may have heard of our eminent professor Irfan Habib.
He's a historian and he's a Marxist also. He stood up and he said, how can you say that? And ours is a socialist republic. And Pandit Nehru said that, प्रोफेसर साहब ये सब किताब की बातें हैं, सोशलिज्म और वेलफेयर स्टेट, ये सीधी सी बात है। आप अपना घर चलाते हैं, उसके लिए पैसा लाते हैं कि नहीं लाते, बस यही घर है आपका। एक साहब खड़े हुए कहने, साहब मैं तो इंग्लिश डिपार्टमेंट का हूँ, मुझको फिर ये इंजीनियरिंग वाला तो उसको तो कोई इंडस्ट्री स्पॉन्सर कर देगी। उनका आप उसकी इंडस्ट्री की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट तैयार कीजिए, उसका एडवर्टाइजमेंट आप लिखिए, उससे पैसा लीजिए। सो मैनेजिंग फाइनेंसेस, अच्छा प्रिंसिपल या आपका चेयरमैन या Vice Chancellor will be helpless. He will depend on you, on the teachers for raising funds for the institution. That is going to be a challenge. Another challenge is again very serious, और ये भी हमारी आपका है, अभी इसकी तरफ मैंने इशारा भी किया। देखिए आज से अंग्रेज इंडिपेंडेंस से पहले illiteracy was a problem. 40%, 30% literacy थी. Thanks to the efforts of everyone, not just again government. Government alone can never do anything. With everyone's effort and contribution in last 75 years, we have now reached almost 100% literacy. At some places it is 90, 85, 90, but it is just a matter of time. In 5 years' time, it will be totally 100% literacy. And there have been many states in the country which are 100% literate for the last so many years, with the Kerala, with the Punjab, with the Maharashtra. Right. Illiteracy is not an issue. The biggest problem, the biggest threat is, listen carefully, is unemployability. Look here, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए चैलेंज, इट इज अ प्रॉब्लम बट इट इज नॉट ए चैलेंज। चैलेंज है अनएम्प्लॉयबिलिटी। हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं, दे कैन नॉट गेट any employment. Why? Because they are not competent. They are not up to the mark. हम आप जिनको पढ़ाते हैं और जो डिग्री लेके निकल के जाते हैं, they are not able to use or write or speak even one proper sentence in English or Hindi or even their mother tongue. ना उनके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, ना उनके पास लैंग्वेज पे कमांड है, ना क्रिटिकल फैकल्टी है, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है। दे आर गुड फॉर नथिंग। दे आर ए बर्डन ऑन सोसाइटी। किसने उनको बनाया? हम ही आपने बनाया। ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है which has been producing millions of young people who are not fit for employment. They don't have such competence. हाथ में है MBA की डिग्री, जो आपका मैनेजर है वो आपका चाचा मामा नहीं, उसको तो आउटपुट चाहिए, रिटर्न चाहिए। When you cannot communicate, when you don't have any presentation skills, what will you do with the MBA degree? I have a BTech degree, but I cannot design anything. I cannot
construct anything, what is the advantage of that? This is a very serious challenge. फिर बता दूं मैं आपको, बिल्कुल मैं आपको कंफर्म बात बता. I have been to some meetings of UGC, Ministry of Education, and Chamber of Indian Commerce, Industry and Trade. Policy meeting हो रही है. For 20 years I was the director, UGC director, so I can tell you with confidence. तो मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि साहब ये बिजनेस के सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड के सब लोग बैठे हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ये जॉब क्यों नहीं मिलते, ये इतने ग्रेजुएट्स हैं, 7 मिलियन ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं, इनको जॉब क्यों नहीं मिलते. देखिए बड़ी आयरनिकल बात है, रोने की बात. वो क्या कहते हैं, ट्रेड इंडस्ट्री के जो चेयरमैन एक से एक उनके सीईओज बैठे हुए हैं, व्हाट दे से, सर we have 3 million vacancies but not a single suitable candidate. Look here, 3 million vacancies, not a single suitable candidate. This is what I meant by the problem of unemployability. We as teachers, we as educational institutions have not been giving life skills to students. We are not preparing them for their future role as professionals, as such graduates who can be employed, who can contribute to nation building. क्या होता है, बीए कर लिया, बीए का मतलब वही है, बैचलर कर लिया, फिर मास्टर्स कर लिया. अब जब से यूजीसी के से एक अलाउंस मिलने लगा है 8,000 रुपी पर मंथ का यूजीसी से पीएचडी करने के लिए, पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं. कोशिश कीजिए आपकी पीएचडी में टेस्ट रखिए, कम लोग का एडमिशन हो, प्रोटेस्ट होता है, अनरेस्ट होता है. पीएचडी आप कर लीजिएगा, क्वालिटी पीएचडी काम नहीं है. अकेले नीट में 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं. सीट्स कितनी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 55,000, अदर 45,000 बाई प्राइवेट कॉलेजेस. उसको छोड़िए, चाहे उसको मान भी लीजिए, तब भी 24 लाख में 1 लाख लोग एडजस्ट हुए. व्हाट अबाउट 23 लाख यंग ग्रेजुएट्स? नेक्स्ट ईयर वो फिर ट्राई करते हैं, फिर 4 लाख नेक्स्ट बैच के आ जाते हैं. नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करते हैं. और रिजल्ट क्या है, जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, फिजिक्स पढ़ने वाला कोई नहीं, केमिस्ट्री पढ़ने वाला कोई नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ने वाला कोई नहीं. आईएससी जो है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहां स्टूडेंट्स नहीं जाते. लैक ऑफ प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ, सब गिल्टी है, स्टेट, पेरेंट्स, बेर और चाल, डॉक्टर, हर एक को डॉक्टर बनना. आपको पता है 55,000 सीट्स हैं स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में. स्टेट मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस.
इसके लिए 24 लाख। बाकी का क्या होगा, इसके बारे में हमने क्या सोचा? They become unemployable, a burden on society, a burden on the country, a burden on their family, and the frustration, the stress, the anxiety, the psychological depression. I'm not talking about that. So that is a big challenge. Right. My last point is, yes, we have to reorganize the educational system. It has been reorganized to some extent, 4-year BA and research skills started BA at bachelor graduate stage and then master's level. But there is still one big gap. उसमें भी हमारा कसूर है। हमारी सोसाइटी में ये जो सर्विस इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जिनको हम टेक्नीशियन कहते हैं, उनको हम रिस्पेक्ट नहीं देते। उनकी जरूरत सबको पड़ती है, हर घर में। आप जितने लोग हैं जरा सोचिए, कितनी दफा आपको जरूरत पड़ती है अपने फ्रिज, अपने एसी, अपने फ्रीजर, अपने वॉशिंग मशीन, अपने ड्रायर, गैजेट्स। हर घर में गैजेट्स। We need skilled persons for that. We hire them, we pay them, but they do not feel satisfied, nor we feel satisfied. West में ऐसा नहीं। In England, in America, these service providers are as well paid, as respectable as any university professor. तो सोशल अनरेस्ट की प्रॉब्लम नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी सी। यहाँ भी ये नहीं है कोई जन्नत है इंग्लैंड या अमेरिका, बट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट दैट सीरियस प्रॉब्लम। इंग्लैंड में तो खैर उनको अलाउंस मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। So this is another area about which, as teachers, as sincere members of the higher education platform, you should think how to fill these gaps. The three major challenges which I pointed out to you: self-financing, next unemployability, and finally this service providers. Right, so only a couple of minutes are left, and it was a great pleasure and privilege to interact with you. And very quickly, any query, any question, any observation, so I can answer that. Please feel free, most welcome. Sir, can you please throw some lights on the entrepreneurships? Is our Exactly. NEP 20? Yeah, we deals about the entrepreneurship. Exactly, but you see, that was my whole point, that we have to change our outlook, isn't it? When I was talking about this creativity or this critical faculty or encouraging students to avoid this rote learning, not examination centered learning. This is what is. So this is what you and I have to do. Very valid point you have made. If we encourage students, our students, right from the early stage, or then you see we have so many skilled persons who are not belong to the education system. If we organize them and infuse into them the spirit of this handicraft and this small industry sector,
that will go a long way in nation building and improving economy. How do we make the students to understand the importance of entrepreneurship? Because most of the students are not interested to take up that, but after the graduation or post graduation or PhD, they immediately look for an employment. And even maybe with regards to the funding or the seed money or whatever, uh, they may not have, but they do have some kind of an idea on entrepreneurship. But ultimately whatever we put in, whatever we, the way we motivate, but most of the students fail to take up that particular avenue. But how do we Yes, make the students to understand the importance of that? yes, as I said, you are absolutely right in your observation, and this is what we say change in the mindset. One practical thing could be, which we try at our university, at Aligarh University as well, is this career counseling units at the school level, isn't it? And at Aligarh Muslim University, we try to uh, not exactly ask the student or command them, but tell them that, look, you are in class 11th, class 12th, you have this opportunity, but they are very limited. This medical engineering. There are other options also. So if we have this career counseling centers or units at an early stage at the educational institution, and for this, more importantly, parental guidance is more important, isn't it? Because it is the parents who this apply this pressure on the students. You have everyone is quota. Do you know about quota, that the what the story goes? These coaching institutes in quota. So young couple entrepreneurs, what you are talking about, MBAs. So they first book a place for their would-be baby in quota, then fix their marriage date. Do you know that? Yes, yes, sir. Yes, it's happening. It's happening Is happening. everywhere. Yes, Exactly. yes. So that shows that shows the priorities, isn't it? Marriage, it might take any time, isn't it? More important is a place in quota for this coaching, for this neat and JE coaching. Right. Okay. Dr. Aftab, yes. How are you? सर एक क्वेश्चन मेरा भी है इसी से रिलेटेड फरमाइए कि फरमाए। हम एकेडमिक लीडरशिप की बात कर रहे हैं, टीचर्स को लीडर बनाने की तो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम CUET लेकर आते हैं जिसके अंदर जो है बल्क में स्टूडेंट आते हैं, और जो क्वालिटी पहले चाहे वो AMU की, JNU की, जामिया की, BHU की थी, वहां पे जो स्टूडेंट की आ रहे हैं वो जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन हो गई है CUET के कारण। तो फिर ऐसे में लीडर क्या करेंगे सर? तो ये सब चीजें देखिए कंसेंसस से होती हैं, एंड यू नो दैट CUT जो है ये भी एक प्रोसेस के थ्रू हुआ है, एंड वी शुड look into it, and then there is another side of the coin also. This at institutional level there is so much variation, there is over marking, and these problems are also there, so very difficult to to pass a judgment on that, isn't it? Okay. Thank you, sir. Thank you Sir, very it much. was an Okay, enterprise. thank you very much, sir. Motivating. Yeah. Great. Thanks. Thank you. It was my great pleasure meeting all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। You are welcome. You are most welcome. Thank you so much, sir. Great. Thanks. Thanks for your complimentary comments. I am overwhelmed by your kindness. Okay. Mary David, so Mahanta. Aftab sir, we will leave the meeting now. Okay, yeah, sure. Thank you. Okay.
Aftab sir, can we leave? Yes, you can leave now. Thank you, sir.